Good afternoon, students. Today is the next topic of the chapter balance of payment. Okay, so next topic is what causes disequilibrium in BOP. Okay, so before doing what causes disequilibrium in BOP, we must know what is equilibrium and what do you mean by disequilibrium. Okay, so equilibrium is when current account balance plus capital account balance plus error and omission is equal to ज़ीरो. ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम कब होगा? जब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर और ओमिशन जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा. सो दैट इज ए इक्विलिब्रियम. और यू कैन से दैट when there is no movement of official reserve of central bank. Okay, already in the previous video I have discussed regarding the official reserve account. So ultimately जब कोई official reserve account में कोई movement नहीं होगी central bank के, so that means BOP is in a balance or in a equilibrium. A disequilibrium in BOP occurs when sum total of current account and capital account balance is not equal to zero. Okay, so the BOP disequilibrium can be of two types, surplus or deficit. So disequilibrium means, as I told you, when current account plus capital account is not equal to zero. It means it is causing movement of official reserve account. So whenever there when would be the BOP surplus? Current account plus capital account balance is some positive number. When it is showing some positive number, then BOP is in surplus. Okay, so it means there is a net inward flow of foreign exchange. What is the meaning of net inward flow? Means the receipts is over there, more income is over there, foreign exchange जो है वो inward हो रहा है, and increase in official reserve. Okay, so whenever the official reserve is increasing, so it is showing the BOP surplus. So again I am repeating, current account plus capital account is a positive number, or you can say that inward flow of foreign exchange or increase in official reserve. And when would BOP would be in deficit? जब करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस नेगेटिव नंबर शो करता है. व्हेन इट इज शोइंग अ पॉजिटिव नंबर, देन वी कॉल इट अ BOP surplus. But when it is showing negative number, so this is called BOP deficit. So that is just vice versa of it. उसमें net inward flow for exchange है, and here net outward flow for exchange. This means foreign exchange जो है that is moving outside. And second is it is leading to decrease in official reserve account. It means official reserve account is decreasing. So outward flow and official reserve account is decreasing is the sign of BOP deficit. Okay, so what are the causes of disequilibrium in BOP? Okay, किन कारणों की वजह से BOP disequilibrium होता है? Here I am not talking about the surplus only. I am talking about disequilibrium could be surplus or deficit. So it could be surplus as well as deficit. Okay, so number one, first factor of BOP disequilibrium is economic factors. So we are going to discuss about the economic factor which are affecting or because of which then there is a disequilibrium in BOP account. Number one, inflation. Okay, as you know very well that what is the meaning of inflation? Inflation is whenever there would be a rise in prices. In simple sense we generally use this word कि जब prices बढ़ते हैं तो हम उसे बोलते हैं inflation in the economy. Fine. So if inflation in domestic economy, अगर हमारी इकोनॉमी में मतलब हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इट मीन्स द प्राइजेज आर राइजिंग इन आवर इकोनॉमी. तो अगर हमारी इकोनॉमी में प्राइजेज राइज कर रहे हैं, सो इट मीन्स फॉरेन गुड्स आर बिकमिंग चीपर. ओके, एम आई क्लियर? दैट मीन्स अगर हमारे यहाँ पर एक गुड जो है वो 70 रुपीज़ की मिल रही है, सो मे बी इन अ फॉरेन कंट्री यू कैन गेट बाय गिविंग 50 रुपीज़ यू कैन गेट दैट good on the same price on lesser prices. तो ultimately import will increase, और जब import बढ़ते हैं तो it will create a deficit in balance of payment. So deficit means disequilibrium in balance of payment. Okay, next is cyclical fluctuation. Cyclical fluctuation is this is a trade cycle exactly. Okay, this is a period of boom, जब बहुत बिजनेस जो है पीक पे होते हैं, प्रॉफिट्स आर ओवर देयर,
this is recession, slowly the economy is coming down, and then this is called depression, जब बिल्कुल lower level पे economy आ जाती है, and then it's a stage of recovery. Okay, so boom, recession, depression, recovery. So here today we are talking about depression, economic slowdown. जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, इसका मतलब है कि ट्रेड साइकिल में जब डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन कुड बी ऑफ बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से डिप्रेशन आ सकता है, जैसे कोई मार्केट क्रैश करना, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया था, एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन मैनी बिजनेस हैज़ बीन शट डाउन, तो उससे इकॉनमी स्लो डाउन होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ डिक्रीज इन आउटपुट. ओके, तो अगर आउटपुट कम हो जाएगी तो इट मीन्स वी कैन नॉट फुलफिल द डोमेस्टिक डिमांड. सो व्हेन वी आर नॉट एबल टू फुलफिल आवर डोमेस्टिक डिमांड, सो इट लीड टू अ डेफिशिट इन BOP. And why? Again because of increase in imports. Okay, so these are the two factors. Number one, inflation. Number two is cyclical fluctuation. There are other factors as well which are creating disequilibrium. The next one is development program. Okay, so exactly a development program. What are the development program? Making roads, bridges, railways, new technology, these are called the development program. Okay, school, colleges. सो अल्टीमेटली डेवलपिंग कंट्री जो है वो मोस्टली डिपेंडेंट होती हैं डेवलप नेशन पर. दैट इज़ फॉर सप्लाई ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी. एज वी पीपल इन इंडिया, ऑल्सो इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, सो वी पीपल आर फॉर यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें. डिफेंस के लिए आजकल हम बहुत खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर रेलवे, वी आर थिंकिंग अबाउट द न्यू. ओके, सो फॉर द सेम, इन सब चीज़ों के लिए वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज. इट मीन्स इट विल लीड टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड दैट विल लीड टू डेफिसिट ऑफ BOP. ओके, सो डेवलपमेंट प्रोग्राम, जब भी एक कंट्री, डेवलपिंग कंट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में सोचती है तो दैट दे आर सपोज टू बी डिपेंडेंट ऑन डेवलप नेशन. अगर डेवलप नेशन से चीज़ें आएंगी तो इसका मतलब इम्पोर्ट बढ़ेगा, एंड बाय विच देयर वुड बी अ डेफिसिट बजट. ओके, next is change in demand. Okay, as change in demand is over there, it means for if fall in demand for country is good in the foreign market, it leads to fall in export. Okay, so अगर demand कम हो जाती है for countries good in the foreign market, तो इसका मतलब फॉरेन में, मतलब इन फॉरेन कंट्री पीपल आर नॉट डिमांडिंग इंडियन प्रोडक्ट. सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ इंडिया. तो अगर वो इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो रही है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वुड बी अ डेफिसिट बजट, और यू कैन से दैट डिसइक्विलिब्रियम इन बजट. नेक्स्ट इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज. एग्जैक्टली अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज. ओके, so those countries which are underdeveloped, okay, they are importing services from developed country. Okay, और उसके लिए जो है उन्हें they are supposed to pay a huge amount for the same. अगर वो उसके लिए अमाउंट पे कर रही हैं, so ultimately it will also lead to deficit in BOP. Fine, so these are all the reasons for BOP disequilibrium. Development experience, inflation, cyclical fluctuation, change in demand and import of services. Next are the political factor. Okay, politics भी हमारे BOP को disequilibrium कर देती है. Number one is political instability. Okay, that means if more political instability is there, it will increase large capital outflows, and it will reduce the inflow, means there would be a lesser flow of foreign funds. And because of political instability, means politically stable नहीं है हमारी इकॉनमी. any economy, if I talk about that, अगर एक कंट्री में political stability नहीं है, instability है, means the government जो है वो टिक ही नहीं पा रही है,
तो उस वजह से लार्ज कैपिटल आउटफ्लो होगा एंड विच विल रिड्यूस इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड. मतलब फॉरेन कंपनीज डू नॉट want to invest in. Why the foreign country want to invest in India? Because they are finding it a huge market, as well as they know that their product would be in a great demand. So but अगर political instability would be in any country, तो वहाँ पर जो है BOP जो है that would be in a disequilibrium. Political disturbance, okay, that means frequent change in government. ओके अगर फ्रीक्वेंटली एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाती है, इट मीन्स इनएडिक्वेट सपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट, तो ये भी इनफ्लो ऑफ कैपिटल को कम करता है. ओके इट्स लाइक अ फैमिली. अगर फैमिली में अगर प्रॉब्लम चल रही हो तो नो बडी वॉन्ट्स टू गिव यू द क्रेडिट, कोई आपको उधार नहीं देगा. ठीक है, रीज़न क्योंकि आपके फैमिली में इंस्टेबिलिटी है. तो सेम एज इट इज़ रिगार्डिंग द कंट्री. अगर कंट्री में डिस्टर्बेंस है, पीपल नोज, कंट्रीज नोज कि इस कंट्री में प्रॉब्लम है, इनके यहाँ पर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, सो दे डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट योर कंट्री, जिसकी वजह से देयर वुड बी अ BOP disequilibrium. Okay, and last but not the least, social factor. Okay, high population growth. अगर एक कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट. पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है कि हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, एंड डिमांड हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, और वो हम फुलफिल सिर्फ अपनी ही डिमांड, अपनी ही इकोनॉमी की डिमांड को पूरा करने के लिए कर पा रहे हैं. तो अल्टीमेटली वी कैन नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ फॉरेन कंपनीज or foreign countries. So ultimately because of that there would be a disequilibrium in BOP. Change in taste, preference, फैशन ट्रेंड. सो अनफेवरेबल चेंज फॉर द डोमेस्टिक गुड लीड टू डेफिशिएंट, क्योंकि लोग जो हैं और यू कैन से दैट देर इज़ अ डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट. डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट इज कि अंडर डेवलप कंट्री जो है ना, दीज पीपल आर थिंकिंग कि नहीं उस कंट्री में, फ्रांस में तो लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं. ओके, इन एनी अदर कंट्री दे आर टॉकिंग अमेरिका, रशिया, दे वांट टू अडॉप्ट देयर कल्चर. ओके, सो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट. इनफैक्ट इन इंडिया एज वेल, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको होता है ना कि दैट पर्सन इज उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है दैट इज़ वेरी गुड, बट माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ नॉट अप टू द मार्क. तो हम क्या करते हैं, उसको देखने के लिए डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं. सो बिकॉज ऑफ फॉर द सेम व्हाट वी आर डूइंग, हम अपनी ही डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड को कम कर देते हैं. ओके, सो this is usually come in case of underdeveloped country where people come in contact with those of advanced country, they start adopting the foreign pattern of consumption. तो इसकी वजह से import जो है वो ज़्यादा होने लग जाता है और export कम होना स्टार्ट होता है. and this is also a reason of BOP disequilibrium. Okay, I hope that the whole chapter is totally understandable to you. Thank you, students.